Correct and latest format of notice writing class 12th board exam 2026. Okay, so when you write notice, the first thing you have to write is the name of the organization or school, whoever is releasing the notice, that name. And keep in mind that that name will come in capital letter. आपको capital letter में school या organization का name लिखना है. After that you will leave a line and then you will write the word notice, NOTICE. Keep in mind this word also बी इन कैपिटल लेटर. आपको कैपिटल लेटर में ही NOTICE लिखना है. उसके बाद आप एक लाइन फिर छोड़िए और लेफ्ट हैंड साइड में डेट. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट डेट एंड आफ्टर डेट इट विल कम द सब्जेक्ट और हेडिंग. नाउ सब्जेक्ट और हेडिंग को कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है. द थिंग इज दैट यू कैन राइट इन बोथ द वेज, बट इफ यू राइट इन कैपिटल लेटर यू आर इट बिकम्स क्लियर एंड आई कैचिंग. ओके, और ये CBSE की मार्किंग स्कीम को भी कंप्लीट करता है, तो यू इज योर चॉइस, बट you can write in both way. I would suggest you that write in capital letter. Okay, and after that comes the body of the notice. Body of the notice जो है वो आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है. Only 50 words are enough. उसमें दिया रहता है, जो word limit दी रहती है. And what you're supposed to write in body of the notice is that first what is the event about. मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे. First आपको event बताना होगा, that what is this notice about, the information you have to give. Then you have to mention that when, date or timing is going to take place on this date at that time, that you have to mention. After that you have to write where the venue, like in the school auditorium or in that particular society, wherever it is, that information you have to give, that who is the concerned people, who are the concerned people that you have to mention, and why, the purpose of the notice that you have to write. It's not necessary. If needed, then only you can mention. At last you have to put your signature and designation, or name or designation, you can say, that is mentioned in the question of the board. From there you can write it. Okay, but keep in mind, first the name you will write, then at last you will write the designation. Okay, designation में like principal है, secretary है, head boy है, head girl है, everything is mentioned in the question, so that you have to write. And the most important thing is that at last you have to close this message inside a box. Box is must. आपको बॉक्स बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो CBSE की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स कट सकते हैं अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया. तो बॉक्स इज मस्ट. दैट्स इट. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.